I just wanted to check if my mic is working all right, if you can hear me. Yeah, we can hear you. We'll be starting in 3 minutes from now. Vash- Vaishali, if you can just do what is required. Hello, can somebody tell me if I'm audible? Am I audible, Aditi? Yes, you are. Both Yes. of you are audible. If you can just use your background, it would be better. A hearty welcome, everyone. I'm P. Shravan Kumar, the founder and CEO of SK Associates and Group, and I would like to welcome you all to today's conference 2.0 on impact of hardcore sales in scaling up for startups. And I'm Aditi Jain, the Chief Strategic Lens Advisor of SK Associates and Group, and I'm Shravan's co-host for Conference 2.0 on impact of hardcore sales and scaling up for startups. SK Associates and Group is an ISO certified internationally accredited management consulting firm registered under MSMED Act 2006 with the Government of India. We provide consulting services in the domains of compliance, legal advisory, strategy and operations, marketing, research and development, human capital, fundraising, and operations to budding student entrepreneurs across the nation. SK Associates and Group was formed with a vision to empower student entrepreneurs and help them in building their dream ventures. Visit our website at www.skngroup.com to know more. We work with startups and train potential student entrepreneurs who are aiming to bring a significant change, either in their business model, in scale of operations, or both. To succeed in this endeavor, our clients need a specific type of consultant, someone who is a problem solver. Typically, such a person is entrepreneurial and passionate, thinks out of the box, has an idea where the problem lies, how to analyze it, and most importantly, what would serve as a perfect solution for it. Such people have lived and worked in different continents and countries. They have worked on exciting projects, they have taken risks, and have scars to show for it. We call such people transformational consultants. We have worked over the last 3 years to build a network of such people, reaching out to them across universities, across industries, and across the gamut of the functional routes. Time and again, we have seen magic happen when we find the perfect solution for our clients, and this is what drives us and keeps us motivated each day. We are passionate and excited about the impact such individuals can have in building the next generation of iconic organizations in the corporate sector. Visit our website www.skngroup to know more. We aim to impact 600 million youths across India by providing them with pro bono consulting services in strategy and operations, compliance and legal advisory, marketing, research and development, taxation, and many other areas, which would help them in building their dream ventures. And we also aim to invest 500 crores US dollars by the next 15 years in various startups in India. We also aim to provide 5,000 plus employment opportunity to various volunteers, industry experts, government representatives, startup advisors, freelancers, PhD scholars, and senior professors to empower young entrepreneurs. We strongly believe that strategic alliance and collaborations shall help us achieve our vision in working for the cause of global economic growth. Our executive management and alliance teams are always dedicated to working towards entrepreneurship development and community impact with a concentration on the point. Students are the upcoming future generation of our nation and need to be empowered for global economic growth. We aim to partner with 1,000 universities and colleges by 2030 to empower, educate, and advise students on various aspects of entrepreneurship and mentor them to build their startup successfully.
Visit our website to know more about us, www.skngroup.com. As we enter 2023, we are consistently seeing the increasing focus and enthusiasm amongst youth towards entrepreneurship. From the advent of Shark Tank India to the advent of multiple billion-dollar unicorns in India in the previous 3 years, there has been a significant change towards a progressive community of professionals and entrepreneurs, since a startup just doesn't mean an innovative business model. It also means a solution to a daily problem that is being faced by a huge crowd out there. Thus, the more we encourage sustainable startups to bloom, the more efforts we are making towards a better future for our upcoming generations of youths. And we are also solving multiple day-to-day problems of the usual crowd and the general public who would prefer to deal with it in a much more usual sort of way. Now, this actually helps in creating employment opportunities. It also helps in solving those problems via convenient and easy, feasible solutions. And it also sustains economic growth and helps the government make investments and purchase decisions. Because at the end of the day, when a startup actually blooms, a huge part of its turnover is returned to the government of that particular country in the form of taxes. The more taxes the government has, the more it can spend on public welfare. So that's how national economic growth and global economic growth are empowered via startups. Now, following ahead, actually, multiple entrepreneurs have already made a change from global warming to climate change, from natural disasters to waste recycling, from biodegradable fossil fuels generation to rainwater harvesting, from creating online schools to universities. Multiple entrepreneurs have already emerged and built this startup successfully. Exactly, Shravan. Am I audible? Yeah, you're audible, Aditya. Sorry for interruption. Exactly, Shravan. Even throughout my career as a professional in the education management and edtech industry, I have seen multiple ecopreneurs change and impact the world via their innovation, ideation, and inspiration. However, a major part of a startup's development and growth depends on sales strategy and marketing campaigns, as that's the only major revenue generating activity of any venture. The same shall lead to an increased rate of scale-up process in any startup. Thus, in answer to many such questions of budding student entrepreneurs on sales strategy, sales for hiring and development, marketing campaigns, and relevant issues, we have organized Conference 2.0 on impact of sales in scaling up for startups. We hope our conference series helps such potential students create an impact in the community and resolve emerging problems via their innovative mindsets and business models. Now, we would like to quickly introduce our honorable guest for today. Firstly, we would like to introduce Mr. Kunal Anand, who is the founder of Fundu Games and an entrepreneur with significant experience in the consulting space as a generalist and data scientist. He has also got a background in both technology and finance, having graduated from IIT Kanpur and with a degree in electrical engineering. He has also completed a MicroMaster in Data Economics and Development Policy from MIT. Throughout his career, he has led multiple database governance-related consultancy projects, analyzing complex information and using data to make informed decisions. Additionally, he has also developed a trading strategy using social listening and understanding the information system running around investment and fundraising. Our next guest is Ms. Sukanya Sen Gupta, who is a strategy area researcher at MTI Gurgaon. Prior to moving to academia, she was a multi-domain industry expert having a decade-long corporate career with financial services industry giants in business strategies, products, process training, corporate sales, co-marketing, and service operations. She has authored India's first novel on organ trade published with Petridge Publishing, a Penguin Random House company. Her research interests are in the area of strategy implementation failures, complexity theory, ambidexterity, and strategic decision making. The case study, authored by her published with AWA publication, is listed on Harvard Business Review. Great. We are also glad to have Mr. Vinod Sridhar, the founder of Sessensel. They help companies set up their sales teams. They support them in their sales processes, scale the operations, and training for the business to achieve the most productive and a feedback-based sales team. Vinod has worked with EdTech, SaaS, and deep tech business development and operations startups. He's on a mission to impact 10 million people to change the way they think and sell.
Vinod strongly believes in the concept of Might be there is a problem. Am I audible to everyone? Yes, you are. Yes, ma'am. Yes. Okay, one second. Let me continue. We are glad to have Mr. Vinod Sridhar, the founder of Sensewell. They help companies set up their sales team. They support them in their sales process, sales operation, and training for the business to achieve the most productive and a feedback based sales team. Mr. Vinod has worked with EdTech, SaaS, and Deep Tech business development and operations. He is on a mission to impact 10 million people to change the way they think and sell. Mr. Vinod strongly believes in the concept of Anam Paul Vazaki, what you think is what you become. Moving ahead, we also have Dr. Prashant Singh, who has graduated in aerospace engineering and completed doctoral in PhD in mechanical engineering and worked at various positions in academia and research. He is the author of various books and research articles with reputed publishers. Now, he is a self made entrepreneur of $1 million startup company. Prashant's company specializes in handling cargo in quite challenging environment, especially when dealing with live animals, dry ice items, perishable items, empty boxes of radioactive materials, and highly temperature and time-sensitive services. Their international services include custom clearance services, shipping services, and complete documentation for the importer and exporter. now we would like to request all the guests and attendees to kindly switch on your respective equipment throughout the conference. We would also like to inform all of you that the HR team is continuously conducting calls in the chat box. Kindly participate in them actively. Further, I would like to thank all the executive management team for the ever building support. We have successfully completed 20 conferences in line. That's a great achievement. Yeah, and actually have been there by my side all the time, and we have actually been. Moving ahead, we would like to request all the attendees to drop a short introduction of yourself in the chat box so that we may get to know each other prior to the commencement of this session. A short introduction would do in the chat box, please. Everyone, we can be a bit faster. That's great. Attendees, a short introduction, your name, your current degree, and the university name would do. Faster, everyone. That's great. Ashutosh. Okay, fine. While you all introduce yourself, I will take it and move forward. Yes. Thank you for the compliments, Shravan. We have a long way to go together yet, and I believe that together we can achieve milestones as a team. Now, we would like to invite Mr. Kulan Anand, founder of Fundu, to enlighten us with the insights on hardcore sales and startups. Thank you, Shravan. Thank you, Sukanya and others. I'm sorry. I'm extremely sorry. There is some internet problem from my side. I'm not I don't know why my camera visibility is so poor. So I will keep the camera switched off, and then I will share my insight about hard sell and startups. Before I start, I will just give a brief intro about myself, my academic background, and my work X. So basically, I am a graduate from IIT Kanpur, and then I have worked in different domains, mainly into consulting and data science.
My current startup, I started working on it in last year January. It has been almost 1.5 years since I started Fundu. Fundu is about retail investors. It is a social networking community of retail investors. Retail investors, as such, like people who invest in stock market, equity market, or crypto market. There are more than 10 crore retail investors in India. So we have created a community for them where they can come together, they can share their knowledge, they can gain insight from each other. There are various issues that have been hampering that particular community. That's why we think this is the right time to start a community like this. And also, the community can take expert advice from each other. You guys can visit also. It's askfundu.com. So, like the current topic that we want to discuss today is hard sales in startup. Okay, before I start, I will just like to know what do you understand by first what is sales in any company, and what is the difference between hard sales and soft sales. Okay, anyone who is interested to give any one-liner definition of sales and hard sales, difference between hard sale and soft sale, can raise your hands or just open your mic and give some idea. Yeah, Anjali, please switch off your mic and you can answer. What do you understand by hard sale and soft Yeah, sale? yeah. Good evening, sir. Yes. Sales is a transaction that include an exchange of services or goods for a certain amount of money. Okay. Yes, go ahead. And what is hard sales and soft sales? So actually, I don't have much idea about this. Okay. Anyways, so basically, sales. Is everyone comfortable with Hindi? Shravan? Yes, sir. Yes, sir. Maybe as audience I've seen, Yes, sir. most everyone is comfortable. ठीक है. ठीक है, तो I will use something like थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश जो हमें बेटर समझ में आएगा. So basically, Sir, sales bilingual is हाँ ठीक है. तो बेसिकली सेल्स क्या होता है? सेल्स इज लाइक एनीथिंग यू आर सेलिंग समवन. कोई भी बिजनेस या Can I व्हाटएवर ask बिजनेस. something regarding that? Pardon? Yes, sir. Sir, can I ask regarding soft sell and hard sell? हाँ प्लीज. Sir, according to me, sir, a hard sell is a direct sell and in short term, and the soft sell is indirect in a long term. We can say. ओके, Yes, sir. ठीक है. तो लेट मी एक्सप्लेन. पहले सेल्स में समझाता हूँ सेल्स होता क्या है. तो एनी बिजनेस और व्हाटएवर यू आर, कुछ भी आप काम करते हैं, बीट एक नॉर्मल आपने रिटेल स्टोर खोल रखा है, या फिर आप बहुत बड़ा एमएनसी चला रहे हैं, बैंक्स चला रहे हैं, या फिर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोल रखा है आपने. तो मेन जो चीज़ है, आपको एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर मनी, कुछ पैसे बनाने के लिए. समथिंग यू आर सेलिंग टू समवन एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो भी आपका कस्टमर है या कंज्यूमर है, वो चीज़ खरीदने के आपको पैसे दे रहा है. तो सेल्स वही हो गया कि अगर मैं भी एक फुटबॉल का फैक्ट्री मैंने लगा लिया, तो मैं भी फुटबॉल बेच रहा हूँ और फुटबॉल बनाने वाली कंपनीज और भी हैं. तो अब मुझे अपना फुटबॉल उसी मार्केट में बेचना है. फुटबॉल खरीदने वाले जो भी लड़के हैं, जो भी लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं या फुटबॉल की कोचिंग चलाते हैं, जो जैसे भी मेरे कस्टमर है, तो उनको मुझे फुटबॉल बेचना है. तो अब वो भी बाकी जो कंपनी ऑलरेडी है, मेरे से बड़ी बड़ी कंपनी है, वो भी बेच रहे हैं और मैं भी बेच रहा हूँ. तो वही है कि अब मुझे एक बेचने के लिए कि मेरा फुटबॉल कोई खरीदे, ना कि उनका. तो ये एक स्ट्रेटजी मुझे बनानी पड़ेगी, उसको सेल्स स्ट्रेटजी कहते हैं. तो यही सेल्स है कि जो भी मुझे बेचना है. ये तो मैंने हार्ड कुछ बता दिया एक सामान बेचने का. सर्विस भी होता है. तो सर्विस हो गया कि जैसे एक लॉयर होता है, ठीक है, इफ यू गो टू द कोर्ट, आपको किसी वकील की जरूरत पड़ती है या आपको किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है. तो डॉक्टर वहाँ पे आपको कुछ
ऐसा सामान नहीं दे रहा है, कोई टीवी या फ्रिज ये सब नहीं दे रहा है, बट स्टिल दे आर गिविंग यू कंसल्टिंग। उनको जो नॉलेज है वो आपको चेक करके बता देगी कि आपकी क्या बीमारी है, क्या इलाज होगा। एंड देन यू सी कि कोई डॉक्टर सेम चीज के आप उस बीमारी का इलाज करवाने जाओगे, उसके पर सीटिंग के 1,000 रुपए चार्ज करेंगे, और कोई डॉक्टर है वो 500 रुपए करेंगे, कोई उससे ज्यादा महंगे भी होते हैं। तो ये उनका अलग अलग है, उन्होंने जो भी सेल्स का अपना क्राइटेरिया अपनाया, अपनी ब्रांड बिल्ड की, एंड देन उसी का वो फीस आप पे चार्ज कर रहे हैं। तो ये यही होता है सेल्स। सेल्स एंड मार्केटिंग होता है जो हर बिजनेस का कोर जो फॉर्म होता है। कुछ भी आप फैक्ट्री में बना रहे हैं या कोई भी आप इसके लिए नॉलेज या जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसको एंड में आपको किसी को बेचना ही है जो पैसे देगा आपको उसके लिए। तो सेल्स एंड मार्केटिंग वो होता है। अब नाउ वी सी कि ये स्टार्टअप और बड़ी कंपनी में क्या डिफरेंस है। स्टार्टअप हो गया कि स्टार्टअप किसको कहते हैं, पहले ये कोई अगर मुझे वन लाइनर अगर बोलना चाहे तो बता दें, स्टार्टअप और बड़ी कंपनी में क्या डिफरेंस है, स्टार्टअप कहते किसको हैं? एनीवन? ट्राई कर लो कोई भी, जो भी समझ में आता है। आजकल तो काफी सारे मतलब लाइक ये काफी कॉमन टर्म हो गया है, शार्क टैंक और इतने सारे मतलब गवर्नमेंट के भी स्कीम्स चलते हैं स्टार्टअप्स पे। ओके, तो आप कोई A बोलना चाह रहे company that have an initial stage of business. हैं? एग्जैक्टली, तो वही इनिशियल स्टेज हो गया। अब इसको जैसे कि हमारा हमारे गवर्नमेंट के भी बहुत सारे वो चलते हैं, लाइक स्कीम चलते हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम का नाम सुना होगा, और DPIIT जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की, वो रिकॉग्निशन देती है स्टार्टअप्स को। तो उनके रिकॉग्निशन के एक क्राइटेरिया ये होते हैं कि कंपनी का टर्नओवर इतना कम होना चाहिए, कंपनी की रजिस्ट्रेशन 10 साल से पहले होनी चाहिए, और प्रॉफिट और सेल्स, ये सब सारी चीजें क्राइटेरिया होती है। वो सब क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो कंपनी को स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, अब नाउ यू हैव स्टार्टअप सर्टिफिकेट, तो आपको बहुत सारे सुविधाएं मिलती हैं। यू गेट मेनी सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, लाइक कि आपको टैक्सेशन में GST भरने में छूट मिलेगा, अलग अलग चीजें हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो अभी यही स्टार्टअप और बड़ी कंपनी में डिफरेंस ये है कि मैंने जैसे वो फुटबॉल वाला एग्जांपल बताया, तो आप फुटबॉल बनाने की अभी फैक्ट्री डालते हैं, एंड कोई बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी फुटबॉल बनाने वाली कोई है, मतलब फुटबॉल खेलने वाला कोई है, वो बता सकता है कोई बड़ी कंपनी हो जो फुटबॉल या स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बेचती हो, एग्जांपल देना। कोई जानते हो, खरीदा होगा? कॉस्को। हाँ एग्जैक्टली, कॉस्को हो गया, Sprinter. स्प्रिंटर भी हो गया, एडिडास हो गया। हाँ, तो ये सारे कंपनी है। अभी ये कंपनी ऐसे हैं कि इनको पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं, और इनका मार्केटिंग बजट जो है वो $1 बिलियन होता है। ठीक है, अभी जैसे एडिडास का जो स्पॉन्सर है, आई थिंक नाइके का है विराट कोहली और रोनाल्डो और मेसी, ये सब ऐसे ऐसे लोग हैं ना। आपने एक फुटबॉल की फैक्ट्री डाली, आपको कोई नहीं जानता, ठीक है, कि सपोज आपका जो भी कंपनी का नाम आपने रख दिया कि लाइक कोई भी नाम बोल दो, अगर सपोज विनोद ने स्टार्ट किया है तो विनोद फुटबॉल करके इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया। अभी विनोद फुटबॉल के बारे में किसी को नहीं पता है, ठीक है। अब फुटबॉल खरीदने वाले विनोद की फैक्ट्री के बारे में नहीं मालूम है। अब मैं जैसे मुझे फुटबॉल खरीदना है, मैं मार्केट में जाऊंगा, मेरे बगल में नाइके और एडिडास होगा, और वहाँ पे एक विनोद वाली कंपनी का भी फुटबॉल रखा रहेगा, तो मैं नाइके या एडिडास ही लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया एक बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि बड़ी कंपनी है, उसको उसके बारे में सबको अवेयरनेस है, सबको पता होता है, तो उनको बेचना सामान ईजी होता है, उनकी रिलायबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, उनको ब्रांड वैल्यू अपना मैनेज करना होता है। छोटी कंपनी के साथ ये चीज़ नहीं होती है। तो दोनों के अपने फायदे और घाटे हैं। एक तो है कि वही कि मुझे पता है एडिडास अच्छी कंपनी है, रिलायबल कंपनी है, तो मैं उसका फुटबॉल 100 रुपये ज़्यादा देके भी खरीद लूंगा, ठीक है। बट वो ये कि अब बड़ी कंपनी है तो उसको सारा कुछ ये ब्रांड मैनेज और वैल्यू ये सब क्रिएट करने के लिए काफ़ी पैसे लगाने पड़ते हैं। छोटी कंपनी में ये है कि एजिलिटी और क्रिएटिविटी चाहिए होती है उनको जल्दी जल्दी, क्योंकि आप छोटी कंपनी है तो आपका खर्चा भी छोटा है। मतलब आपको विराट कोहली या रोनाल्डो या मेसी टाइप के लोगों को ब्रांड वैल्यू इंडोर्समेंट के लिए पैसे नहीं देने होंगे आपको। वही कि अपना तो इनिशियली जो है कि ये सब जो
सॉफ्ट सेल वाली चीजें होती हैं। सॉफ्ट सेल और हार्ड सेल का मैं डिफरेंस ये बता देता हूँ, यही होता है। हार्ड सेल हो गया कि जब आप डायरेक्टली कस्टमर से मिलके उनके सामने बेचते हैं, कुछ उनके साथ में आपको कॉल सेंटर से कॉल आता है कि बजाज फाइनेंस जो है आपको लोन दे रही है, ठीक है, या फिर आपको कोई एजेंट होते हैं वो आके मिलते हैं कि ऐसा ऐसा ऑफर है जो आपको आप ले सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अदर वे कि आप टीवी पे आपने ऐड देखा बजाज फाइनेंस का, उस पर अमिताभ बच्चन आके बोल रहे हैं कि कुछ कुछ करना चाहिए। आपने लाइक इफ यू गो थ्रू योर ट्विटर हैंडल और फेसबुक और इंस्टाग्राम, देयर यू सॉ सम एडवर्टीजमेंट कि वहाँ पे कोई और इन्फ्लुएंसर है वो बेच रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस यही हो गया। हार्ड सेल हो गया जहाँ पे पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होता है, ठीक है, पर्सनली आपको अपने ब्रांड के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करना है। सॉफ्ट सेल्स हो गया कि जहाँ पे आप ये वाले मीडियम्स यूज़ करते हैं, टीवी हो गया, चैनल हो गया, या और भी तरीके के जो मीडियम्स है वो सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि स्टार्टअप्स के लिए हार्ड सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सॉफ्ट सेल काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है एक तो, एंड ऑल्सो सॉफ्ट सेल में है कि इफ़ यू गो थ्रू फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, तो उसमें काफ़ी नीचे में आप रहेंगे, क्योंकि बड़े जो प्लेयर हैं, बड़ी जो कंपनीज है, वो ऑलरेडी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने वाले लोगों को पहले ही पे कर रही हैं, और उतने आपके पास कैपेबिलिटी होते नहीं है स्टार्टअप्स के बाद। स्टार्टअप के बाद बहुत मतलब जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब जो पैसा होता है काफ़ी कम होता है खर्चा करने के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग पे। वो बड़ी कंपनी के साथ वो वाला लिमिटेशन नहीं है। इस कारण से स्टार्टअप्स को ये चैलेंज आता है, ठीक है। तो इस कारण से स्टार्टअप्स को ये हार्ड सेल में जाना इज मच बेटर ऑप्शन। जितने लोगों को पर्सनल नेटवर्क में हो गया, या जितने फिजिकली अप्रोच कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, इन पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप अपने नेटवर्किंग के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, तो वो इनिशियल तरीका अपनाना पड़ता है स्टार्टअप्स को, ठीक है। स्टार्टअप के साथ एक और बेनिफिट ये है कि आपका कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, यू डोंट हैव एनी रेपुटेशन इन द मार्केट। तो सपोज समवन सेज कि भाई आपका फुटबॉल हमने लिया था बट इसके थ्रेड निकलने लगे या ये लीक कर रहा है, तो इट विल नॉट डैमेज योर ब्रांड वैल्यू। आप थोड़ा सा चेंजेस वगैरह करोगे अपने मैन्युफैक्चरिंग में, एंड देन यू विल अगेन स्टार्ट सेलिंग इट। फॉर द बिगर कंपनी और कॉर्पोरेट, बड़ा जो है, जैसे एडिडास का फुटबॉल जो है, इफ यू आर गोइंग टू अ मार्केट एंड परचेजिंग एन एडिडास फुटबॉल, तो वो फुटबॉल जो है एटलीस्ट 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तब आप उस दुकान में पहुंचा होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे उसका जो ब्लैडर है, ब्लैडर बना होगा चेन्नई में, उसका जो ऊपर वाला कवरिंग है दैट वुड हैव बीन मेड इन सूरत, एंड उसकी जो इनिशियल वो निटिंग और ये सब चीज़ें होती है वो किसी और जगह हुई होगी। मतलब इनके अलग अलग जो बैक एंड वाले फैक्ट्रीज होती हैं बहुत अलग अलग जगह होते हैं, तो ये इतना कुछ ट्रेवल करके वो आपके पास आता है, ठीक है। तो उनके अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आती है स्टिचेज में या लीकेज में और ये सब, तो उनको बहुत लंबा चौड़ा पूरा मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा, वो आपके साथ स्टार्टअप्स के साथ नहीं होता है। तो ये सारे एक फ़ायदे हैं स्टार्टअप्स को, और इसलिए स्टार्टअप्स को हार्ड सेल्स पे ज़्यादा जाना चाहिए। सेल्स की साइकिल क्या होती है, ठीक है, अभी तो सेल्स का आइडिया लग गया हो ना, सेल्स होता क्या है और क्या है। तो सेल्स की साइकिल क्या होती है, कोई अगर थोड़ा 2 रुपए का ज्ञान देना चाहे उस पर, कुछ भी, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, लाइक इफ यू वांट टू सेल समथिंग टू समवन, हाउ विल यू स्टार्ट एज ए स्टार्टअप? एनीवन कोई ट्राई कर लो थोड़ा, कुछ भी। अगर तुमने एक सपोज क्या टीवी बेचना है, तुम्हारी नई स्टार्टअप है, टीवी बनाते हैं, यू वांट टू सेल टीवी टू योर कस्टमर्स, व्हाट विल योर अप्रोच बी? Consider targeting a low-level customer mind market, Okay. and best strategic to how to put your check and stack will be the together. Yeah, exactly. तो वही है कि लाइक, हाँ Customer बिल्कुल, acquisition cost, maybe costing will be different. हाँ एग्जैक्टली। Sir, our first step will be creating awareness about the product, and then we will try to develop the favorable attitude in mind of customer towards our product, and we will try to मतलब उसके दिमाग में हम डिजायर क्रिएट करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, और फिर फाइनल स्टेप आता है कॉन्विक्शन वाला कि हम अब उसे बेच देंगे। एग्जैक्टली।
तो यही है कि हियर इट इज ऑल्सो सेइंग अगेन कि सेल्स साइकिल जो है फॉर अ कॉर्पोरेट ओके इज मच लॉन्गर देन फॉर अ स्टार्टअप। जो सेल्स का साइकिल होता है, साइकिल मतलब कौन कौन से स्टेप आ रहे हैं। तो फर्स्ट इफ यू वांट टू सेल, फुटबॉल वाला ही लेते हैं, फुटबॉल का थोड़ा हमने कर लिया है एक्सप्लोर। तो फुटबॉल अगर हमें बेचना है तो व्हाट वी विल सी कि सपोज हमने फुटबॉल की फैक्ट्री लगाई है, सपोज इंदौर इंदौर में हमने फैक्ट्री लगाई है, ठीक है। हमारे पास अब एडिडास का है तो एडिडास की शोरूम हर शहर में है, उनका सप्लाई चेन चलता है। दे मैन्युफैक्चर फुटबॉल इन चेन्नई, आई थिंक फुटबॉल MRF और उनके साथ में कुछ है, तो वहाँ पे उनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ पे फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर अ स्मॉल कंट्री जैसे विनोद की फैक्ट्री है वहाँ पे इंदौर में, तो विनोद क्योंकि उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं है विनोद का, तो ही विल सॉ कि इंदौर के आसपास की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे हम ये फिजिकली जाके दे सकते हैं। पहले हमें स्टोर्स को देना होगा, जहाँ जहाँ पे स्टोर्स पे रखना होगा, क्योंकि स्टोर में फुटबॉल लोग स्टोर पे ही खरीदने आते हैं। आजकल ई-कॉमर्स से भी खरीदते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सेल्स आर हैपनिंग थ्रू स्टोर्स ओनली। तो वही है कि इंदौर और इंदौर के आसपास की जो भी नियर बाई सिटीज़ हैं वो हम पहले टारगेट करेंगे, एंड देन वी विल एक्सप्लोर कि भाई मार्केट कैसा है। तो मार्केट हमारा जो फुटबॉल खरीदने वाले हैं वो दे आर मोस्टली स्कूल एंड कॉलेज गोइंग किड्स, वही लोग खेलते हैं, या फिर स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्पोर्ट्स एकेडमी हो गया, वो सब होंगे, ठीक है। तो ये 2-3 टाइप के हमारे कस्टमर हैं। अब इन कस्टमर जो हैं वो इंदौर या आसपास के जो भी MP के सिटीज़ हैं वो सब एरिया में हमने एक्सप्लोर कर लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स सेंटर हैं, या जो भी स्पोर्ट्स क्लासेज और ये सब कोचेज वगैरह हैं, सबको हमने चूज कर लिया। एंड देन हमने उनको फिजिकली या बाई थ्रू कॉल्स या थ्रू अदर मीडियम अप्रोच करने का ट्राई किया, ठीक है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अब अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद हमने ट्रस्ट क्रिएट किया। जो कोचेज हैं और इनको भी हमने कुछ कुछ वो कहा कि हम थोड़े कम पैसे में दे देंगे, हम स्टूडेंट्स को कुछ जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दे देंगे, या इस टाइप से हम कुछ कुछ ऑफर करते हैं कॉलेजेस, स्पोर्ट्स कोचेज और ये सब, ताकि उनका इंटरेस्ट जगे कि हाँ दे आर डूइंग गुड, दे आर गुड पीपल। अभी ठीक है, ये मार्केटिंग के तरीके हैं, कुछ कुछ ऑफर इनिशियली कस्टमर एक्विजिशन करने के। अब फिर ये हो गया, उसके बाद फिर लोग धीरे धीरे जानने लगेंगे उस आसपास एरिया में। तो जो भी कोचेज हैं या स्कूल्स हैं वहाँ पे कुछ कुछ तो डायरेक्ट टाई अप्स भी हो जाते हैं, एंड देन वो अगर जा रहे होंगे फुटबॉल का उनको परचेज करना होगा, तो दे विल ऑल्सो लुक फॉर कि वो विनोद वाली फुटबॉल है कि नहीं वहाँ पे, और वो एडिडास की जगह विनोद वाली, क्योंकि उनको अवेयरनेस हुआ, आपने उनको टारगेट किया, इंटरेस्ट बनाया, तो उन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया कि हाँ। तो ये हार्ड सेल, प्योरली हार्ड सेल हुआ, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टअप्स में हार्ड सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्ट सेल में आप compete नहीं कर पाओगे। एडिडास, नाइके, प्यूमा और कॉस्को, MRF, इन सब से compete करने जाओगे तो ना आपके पास बजट है, ना आप उतना अचीव कर सकते हो, उनको compete कर सकते हो। तो इसीलिए सेल्स जो है हार्ड सेल स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। द लास्ट थिंग इज दैट आई विल डिस्कस, आई थिंक मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया ऑलरेडी। तो लास्ट थिंग इज कि ये सेल्स साइकिल को हमें छोटा करना है। स्टार्टअप के पास वही मैंने अगेन कि स्टार्टअप के पास बहुत सारी बाइंडिंग्स होती है। एक तो है कि आप जब तक रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे, रेवेन्यू की मतलब आपके जो भी 5-6-10 लोग जितने काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आपको देनी है, फिर मार्केटिंग और ये सब में जैसे कोच वोच और इनको ऑनबोर्ड करते हो, ठीक है। आप रोनाल्डो को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, या फिर विराट कोहली को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, या सुनील छेत्री को नहीं कर सकते। तो अब लोकल वहाँ पे जो भी कोचेज वगैरह होंगे या लोकल थोड़े पॉपुलर स्पोर्ट्स प्लेयर होंगे उनको ऑन बोर्ड करोगे कि वो आपके लिए बोले कि हाँ भाई ये अच्छा ब्रांड है, पीपल शुड यूज इट। तो वो सब, ये सब के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा लंबा साइकिल नहीं रख सकते। तो छोटा साइकिल लेना है, तो जितनी जल्दी आपको कस्टमर एक्वायर करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है कि भाई ये जो आसपास के 100 स्कूल है, 50 स्कूल्स हैं, वहाँ पे हमारे फुटबॉल पहुँचने लगे, तो इस साइकिल को छोटा करना है। इसके लिए वही है कि इनिशियली आप पोर्टफोलियो बिल्ड करो, रेपुटेशन बिल्ड करो, एंड गो थ्रू जो भी आपके इन्फ्लुएंसर हैं आपके पर्टिकुलर जोन में। आप स्पोर्ट्स वाले साइकिल में तो स्पोर्ट्स पर्सन इन्फ्लुएंसर होंगे, ठीक है, उनको अप्रोच करो, उनको ऑनबोर्ड करो, उनके थ्रू थोड़े बहुत ब्रांडिंग करवाओ। ब्रांडिंग को पैसे लेंगे, बट वो सब ब्रांडिंग वगैरह के तरीके, तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग के तरीके होंगे। एंड ये सब करने के बाद धीरे धीरे आपका सेल्स साइकिल जो है छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे ब्रांड बिल्ड होती जाएगी। और फिर वही है कि आप सर्कल अपना बड़ा करेंगे। इफ यू हैव एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ प्लेयर, एज अ मार्केट प्लेयर फॉर फुटबॉल,
तो वो फिर आप जैसे आपने इनिशियली इंदौर और आसपास के एरिया देखा, आप धीरे धीरे अपना सर्कल बढ़ाएंगे. यू विल गो टू मोर सिटीज. लाइक आप इंदौर से निकल के फिर जयपुर भी जाएंगे, आप अहमदाबाद भी जाएंगे, कानपुर भी जाएंगे, पटना भी जाएंगे, कलकत्ता भी जाएंगे. तो ऐसे आप एक्सपैंड करेंगे अपने मार्केट को. जैसे जैसे आपका कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, यूजर बेस बढ़ता जाएगा, एंड रेपुटेशन और पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा. ठीक है, ठीक है. तो आई थिंक दैट वाज फ्रॉम माय साइड. हार्ड सेल्स स्टार्टअप में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक एग्जांपल बताया, ये फुटबॉल का बताया, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का बताया. बिजनेसेस बहुत टाइप के होते हैं, कुछ सर्विसेज होते हैं. जैसे हमारा, जैसे वी आर प्योरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्ड सेल मतलब लाइक वी ऑल्सो है कॉम्पिटिटर, बट वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोस्टली डिपेंड ऑन सॉफ्ट सेल्स. हमारे पास जो सेल्स एंड मार्केटिंग के तरीके हैं, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, या हमने कोई एडवर्टीजमेंट करवा दिया, हमने गूगल मार्केटिंग होता है, इंस्टा मार्केटिंग होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, ये सब तरीके ज़्यादा चलते हैं. बट स्टिल हियर हार्ड सेल्स इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें लाइक जो इन्फ्लुएंसर है, इनिशियली हम बड़े इन्फ्लुएंसर को नहीं ले सकते, ब्रांड्स को नहीं ले सकते. अभी ड्रीम 11 है, तो ड्रीम 11 हैज़ द मनी टू ऑन बोर्ड पीपल लाइक सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर फॉर दियर ब्रांडिंग. बट वो ड्रीम 11 काफ़ी बड़ा, वो स्टार्टअप के लेवल पे नहीं रहा. लाइक वो यूनिकॉर्न हो चुके हैं ऑलरेडी. तो अभी नए नए जो कंपनीज है, वो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड करेंगे, तो उनको फिजिकली हमें पर्सनली अप्रोच करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि वी आर डूइंग दिस, दिस विल बी अ गुड थिंग इन फ्यूचर. तो इसलिए हार्ड सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक दैट वाज फ्रॉम माय साइड. एंड श्रवण सर, आप एनीथिंग एल्स या और कोई कुछ पूछना चाहता है तो दे कैन आस्क. Firstly, I would like to thank you, Kunal ji, for this interactive speech. Actually, most of our speakers are completely into English, but interaction nahi ho pata. Yours were quite interactive. And I will also like to apologize to all the audience. We all are facing a lot of network issues today in spite of having stabilized Wi-Fi connections. I do not understand why that happens, but still, estimating that technical defaults are very normal. I would like to proceed to inviting all the audience to put forward the questions, if any. You can simply raise your hands, unmute yourself, and ask Kunal ji any questions you have. Anyone? सिर्फ सेल्स मार्केटिंग की नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हो. लाइक आई एम ऑल्सो डूइंग स्टार्टअप, तो स्टार्टअप की काफी सारी चीज होती है. अगर कोई फ्यूचर में Anything on entrepreneurship, startups, sales, marketing, anything out here? Any queries you have? You can just unmute yourself and speak out. No queries. Okay. Kunal, I had a question out here. When we come to marketing, we talk of like customer retention rate. बहुत common term है ये. Gaming industry में तो बहुत ज़्यादा common है. You must already know it. So it's like what is the importance of this customer retention rate into marketing, especially for like start 2 years, initial 1 or 2 years. So yeah, it is a very important जो metrics that's actually not pointing out to the revenue bringing activity, right? So revenue bringing activity is directly meeting your customer, directly getting your customers onboarded. So that's typically the revenue building activity. So when you focus more on the revenue building activities in your startup, that's hardcore selling, nothing else. And when you start with revenue building activities, there's few important activities that I'd like to highlight here so that you can take away and apply that in your own startups and see how that works or not, right? So first thing is upselling. So I'm sure that you would have heard these terms before, but start to think in an aspect of how we can use this particular strategy to bring and prioritize revenue bringing activities in your business, right? So start thinking in that perspective, and you'll be getting a ton of ideas where you can implement in your startups, right? So upselling, this is something that we'll have to think about in a way that okay, so let's have this interaction a bit. So what is the best time to sell something to someone? Anyone? What's the best time to sell something to someone? Sense of urgency.
sense of urgency. Okay, so when they're feeling it's urgent, it's the best time to sell. Okay, very good. Thank you, Omkar, for your answer. Go When to demand is crowded high area and make a during stall. weekdays. I didn't get you, Amitesh. Can you repeat that, please? I hope it was Amitesh that was talking, right? I missed whatever you told. Great. So enduring group, demand is high weekdays, while there's an urgency with the customer. Yeah. So these, as much as these points are good, the best time to sell something to someone is actually when they've just bought. Right? See, the sales presentation anyway, for any product, when you're having a sales presentation or for any sales that you're approaching a customer, what happens during that time? So they'll have to develop a sense of trust. They'll have to, like, believe that this product is going to help them in a way that they wanted to. They'll have to, they'll have to have a feeling of, okay, this is worth what I'm going to pay for, and then they'll have to make a decision of purchase right now, right? So after all these things, when they've made a decision of purchase and they've already took out their wallet to pay for something, at that point of time, when you're upselling them to a different product which can add on or complement to the existing product, that's the best way to scale by upselling your customer, because that's going to be the best time, because they've already made a decision to buy something, right? So they are in the buying mode. When you call it as a buying mode, then when you complement something, they take it together. So that's what happens. I'll also give you a very good example that McDonald's has applied in all the centers that they work with, right? So someday someone came up with this strategy, and they randomly set up a meeting with the sales team, with all the McDonald's sales associates, whoever is going to be in the bill counter, and then they told him, hey, this is what you're going to do. Whenever you sell a burger, you're going to ask him, would you like to add some fries? See, this simple line, the simple strategy started generating millions and millions of revenue for McDonald's. They did not invest much into anything. Like, they did not go for investors. They did not invest much into getting other products. The simple strategy that they followed is they had their sales training. The sales trainer told the sales team that this is the line that you're going to add along with whatever you're going to pitch to the customer. Would you like to add some fries? So you can imagine, right? So what's happening in their minds, right? So when the customer is in the buying mode, when the customer has already purchased a burger, when you make them, like when you tempt with something else which is going to complement that, they're already ready for it. Okay, so that's how And growing profitability is not just restricted to hardcore push sales. So I know I'm moving a little bit from the mainstream topic. However, this is important for you to know, because you all are budding entrepreneurs. I'm sure someday or the other, since you are attending this conference, someday or the other, you would plan ahead your entrepreneurship venture. So this is very important for you to know that scaling up and growing profitability is not just restricted to hardcore push sales, but serving customers with a digital direct to consumer model and sustainability. So let's get thinking that how does the future of work weave together scaling up with hardcore sales? Well, as I said, there is much more beyond just hardcore sales and scaling up that the world today needs to understand in order to create a business which is profitable as well as sustainable, because you can't really think of profitability and growth without planning your sustainability forward. Because what's the point? I mean, today you will grow, you will reach a certain level. If you can't sustain there, if you get back to where you had started from, what's the point? So that's something which you need to plan ahead. And let me share with you this company which I had wrote a business case on very recently, that's listed with Harvard right now. This was a startup, and it was an SME startup rather. So they got a very big funding from a very big company, venture capital fund. However, then COVID hit.
and they were a renewable energy company into solar energy. So they used to commission projects even abroad. So they were the first SME, one of the very first SMEs to go international. They got a very good funding. Everything was hunky dory. However, when COVID struck, all their projects were stuck. Though they had the agreement signed, they could not commission the projects. No backup plan. So funds alone or having customers alone can't get you where you have to be or where you want to be, right? So again and again, I would say that hardcore sales is, of course, very, very important. But do not, I would say, drive away your customers by pushing too much into their own territory, right? So the next gen operating model that you all are going to explore that can sustain new levels of speed, agility, as Mr. Sridhar also mentioned about agility, efficiency, precision. These require transforming the customer journeys that matter through a combination of capabilities and approaches. You have to identify what capabilities do you have, what are your strengths, and also identify your weaknesses so that you can uh, work on having those settled, right? So now, how can we do that? How can we look at working on our capabilities and approaches to sell or have new customers? See, ultimately, the end goal of any venture is to have uh, profitability, growth, of course, but the most importantly, to have customers who are loyal, right? So that you never have to think of how do I run my business going forward. So how can we do that? One way to do that is building a cross-functional foundations, right, to scale and sustain the benefits of transformation. So cross-functional foundations, as in not just sales, but integrate all your departments. Right? So today, every organization is technically very sound. So what differentiates one organization from the other? Even I can buy, if I'm a manufacturing firm, even I can buy machinery, right? I can buy machinery. I can hire the best of talents. I can have a very good research team. Everything can be fine. I can make very good products, good brand name. Everything is fine. But what will differentiate me from my competitors, my talents, my people? Because they are the face of the organization when they go out into the field, talking to people, interacting with them, right? So you can't just think of uh, hardcore sales, growth, and profitability alone. See, let me give you an example. Uh, by the way, please stop me whenever there is a question. You need not wait till the end. All right. Now, most of us have heard about WeWork. It's a co-working space, right? People in Delhi NCR know about it pretty well because companies these days, especially after COVID, not many companies are renting out their own office spaces, but they go to WeWork. It's a hugely celebrated co-working venture. So wherein they rent out office spaces, fully furnished office spaces, with their own pantry and everything to multiple organizations. Okay. Now, there you don't have separate cabins and all. It's just conference rooms and one workspace for all of them together. Now, about 5 years back, they raised about 10 billion US dollars in equity and debt. Its top line revenues had the same doubled up. It had doubled up for 5 consecutive years, 5 or 4, I'm not sure, but 5, I suppose. And its membership had also grown tenfold. But over the same period, what is devastating is their operating cost rose from $400 million to almost $2 billion.
because when you raise capital, when you have more customers, when you have more uh, services to offer, naturally your operating costs go up, right? That led to significant losses for them because you cannot toggle between growth and profitability, right? So that's when you must extrapolate. Now, what do I mean by extrapolation? It is exploring profitable growth options simultaneously while exploiting economies of scale and scope. To give you an example, what Reliance did almost about 20 years back. By Reliance, I mean Reliance Infocom, which was there, who started mobile business for 500 rupees a phone. They used to give a CDM handset, which is now obsolete. A CDM handset for 500 rupees, as well as a connection, right? So what did they do? They explored profitable growth options. They went for hardcore sales, advertisements, uh, everything. At the same time, they exploited economy of scale and scope. How much can they go about, right? Now, sales is generally associated with hardcore numbers, right? Uh, how many leads you have generated? What are the targets? What are my expense ratios? What are my conversions? And of course, how much revenue I'm generating, right? However, within all these jargons, we tend to forget one thing, the most important pillar of a sales program. What's that? Can anybody tell me? Can anybody tell me? Anyone? Take a try. What do we forget about among all these jargons of leads, targets, expense ratios, conversions? Nobody? Well, I'll tell you. I'll tell you. So, while thinking of all these things, we forget the individuals behind the numbers, right? The people, the stress levels that's rising. Remember, higher the stress, lesser the productivity of a person. So finally, just to conclude, I know I have almost taken 15 minutes time. Just one last point before I conclude. So finally, to my thinking, selling is not difficult at all. Each moment we all are selling ourselves, aren't we? We try to position ourselves as a superior one amongst our peers, right? So take your company as your baby, as selling it, as positioning it as the best as we can. Similar in a similar fashion as we position ourselves that okay, this is what I have done, that is what I have done. This do we brag about ourselves? No, we don't. We go very subtly. So even hardcore sales is possible to be done in a very subtle manner. That which doesn't scare the customers. Scare it. This company is pushing too much into us, which means they are not very good. That's why they are doing so much of hardcore sales. So in a very subtle manner, we must go ahead with it and try to build networks, which is extremely important. Building networks, you never know who comes in handy at what point in time. That's very, very important. Besides selling, selling is not everything, frankly. I have worked in sales, I've worked in strategy, and today I can tell you with conviction, selling is not everything. It's not the last word. And finally, be accountable and build accountable people in your team. People who will be accountable not only in terms of rights, but also responsibilities. Right? So I conclude with this. Any questions, anything that anybody has to say or anything? I'll share my email ID though. Anything that anyone wants to say? Over to you, team. Thank you. That was actually a great speech, Sukanya, especially Thank you so the much. sales part. You did come to it a bit more
differently, but yeah. Anyway, I would like to thank Ms. Sukanya Sungupta for her amazing speech, and I would also like to request her to share her email ID in the chat box for any queries our attendees might have. Further moving on, I would like to invite Dr. Prashant Sharma, Chairman of Tej Logistics Private Limited, to share his insights. Yeah. Thank you, strong sir, and thank you all the team member of SK Associate, and thank you Aditi Jain ma'am for communicating to all the members and organizing this meeting. And apart from that, I also would like to thank our eminent speaker, Mr. Kunal Anandji, and Vinod Sridharji, and Sukanya Sen Gupta जी. और जो मैं समझ पाया कि ऑलमोस्ट सारी चीजें अगर आप देखोगे रिसर्च ओरिएंटेड, तो सुकन्या सेन गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से केस स्टडी और रिसर्च ओरिएंटेड चीजें उन्होंने अच्छे से कवर किया है. इसके बाद जो कुणाल आनंद जी थे, वो एकदम से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजें उन्होंने काफी प्रैक्टिकली चीजों को कवर किया है. और विनोद श्रीधर जी ने उसको एकदम से जिस तरीके से आपका थीम है, उसके थीम के हिसाब से उन्होंने चीजों को बनाया था. अब ज्यादा कुछ मुझे बताने को बचा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत सारी चीजें बता दिया है. सेम रिपीटेशन रहेगा तो मुझे लगता है कि उतना अच्छा रहेगा नहीं सेशन. तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ा था उस चीज को मैं डिस्कस करूंगा. और जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ऑलमोस्ट एवरीबडी हिंदी में कंफर्टेबल हैं, और अगर चाहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी बात करूंगा बीच बीच में. तो मैं कोशिश यही करूंगा कि हम लोग जो है किस तरीके से जो है आगे बढ़े हुए हैं अपनी स्टार्टअप को लेकर के. मैं खुद भी हार्डकोर सेल्स स्ट्रेटजी से ही आगे बढ़ा हूं, और एट प्रेजेंट मैं ज्यादातर हार्डकोर पर ही बिलीव कर रहा हूं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग है, और अभी टिल नाउ मैंने फंडिंग नहीं ली हुई है. तो हमारे पास ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हार्डकोर सेल्स स्ट्रेटजी पर करें, लेकिन उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है. तो सबसे पहले जो है हम लोग ये समझेंगे कि आपने जो थीम रखा हुआ है, ये थीम आपने रखा क्यों है. एज ए बिजनेस पर्सन सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट थिंग क्या होती है? डियर ऑडियंस, आप लोगों अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस में सबसे ज्यादा फेवरेट चीज के कौन सा शब्द होता है किसी भी बिजनेस का? किसी भी बिजनेस का सबसे ज्यादा फेवरेट चीज क्या होता है? Marketing could be. Yeah. It is visible. Yes, it is. तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, वो होता है सेल्स. क्योंकि मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कुछ भी चीजें रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या जब सबसे ज्यादा खुशी एज ए बिजनेस पर्सन मुझे कब मिलती है? जब मेरा सेल्स होता है. आप लोग एग्री हैं नहीं है ऑडियंस? आप सभी लोग एग्री हैं इस बात से कि अगर आपके बिजनेस में सेल्स हो रहा है तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? यस. तो सबसे फेवरेट वर्ड, मेरा फेवरेट वर्ड सेल्स है. अगर हमारे बिजनेस में सेल्स हो रहा है तो मुझे पता है मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, बिजनेस में स्केल में कर पाऊंगा, और शेयर मार्केट में भी लॉन्च कर सकता हूँ, आईपीओ भी ला सकता हूँ, या कुछ भी चीजें कर सकता हूँ अगर मेरे बिजनेस में सेल्स हो रहा है तो. तो सबसे फेवरेट चीज हमारा क्या है? सेल्स है. सेल्स हमें जरूरत क्यों है? अगर हम लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको कंपनी स्टार्ट करने के लिए भी सेल्स की जरूरत पड़ेगी. हमारी कंपनी सरवाइव करे इसके लिए भी मुझे सेल्स की जरूरत पड़ेगी, और हम अपनी कंपनी को स्केल कर सके इसके लिए भी सेल्स की जरूरत पड़ेगी. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सेल्स है. सेल्स के बारे में सब लोगों ने आपको बता ही दिया है कि सेल्स का मतलब ये होता है कि आप
कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, कुछ भी चीज आप देते हो, उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिलता है, कुछ रेवेन्यू आपका बढ़ जाता है। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। सिंपल भाषा में बात करें तो इससे आपको क्या है, कुछ पैसा मिल जाता है। अगर आप कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विस सेल्स करते हो तो आपको कुछ पैसा मिल जाता है। अब हम लोग जो हार्डकोर सेल्स स्ट्रेटेजी को हम लोग जो समझते हैं कि जो हार्डकोर सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होती है, हार्डकोर सेल्स स्ट्रेटेजी को जो हम लोग समझते हैं, ऐसा हम लोग समझते हैं कि हमको जाना है और किसी को डरा करके, धमका करके, जैसे एक शेर कोई है वो पेन बेच रहा है घोड़े को, तो कुछ इस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि हार्डकोर सेल्स स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से होगी कि जो है हम सामने वाले को डरा करके, धमका करके या किसी भी और तरीके से प्रेशराइज करके, जैसे कि लोग बोलते हैं कि बायजू जो लोग मतलब सेल्समैन रहते हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर के मार्केटिंग करते हैं। तो इस तरीके से लोगों के बीच में जो एक थिंकिंग रहती है कि हार्डकोर सेलिंग टेक्निक का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर के किसी को सोचने का समय ना मिले, इस तरीके से हम लोग मार्केटिंग अपनी करें। तो उस तरीके की चीजें हमें नहीं करनी है। हमको हार्डकोर जो सेल्स स्ट्रेटेजी हम लोग कर रहे हैं, तो जो हम लोग समझते हैं बेसिकली उस तरीके से हमको नहीं समझना है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लें तो दो दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त का काम था वो काफी अच्छा चल रहा था, दूसरे दोस्त की सेल्स कम हो रही थी। तो उसने पूछा कि जो है आपका सेल्स कम क्यों हो रहा है, या सेल्स हो क्यों नहीं रहा है जबकि मेरा अच्छा हो रहा है। तो उसने, जिस दोस्त का अच्छा हो रहा था, उसने बताया कि एक्चुअल में क्या है कि आपको कोशिश ये करनी है कि अपना जो सामान है वो हर किसी को बिजनेस बेचने की कोशिश आप करो, और हर किसी को जिसको आप बेचने की कोशिश करो उसको पहले आप आइडेंटिफाई करो कि उसको वो प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है। तो जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वेदर उसको जरूरत है या नहीं है, और हम उस पर बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं कि आप भी इस चीज को ले लो, आप भी इस चीज को ले लो। तो कहीं ना कहीं जब एक नया स्टार्टअप हम करते हैं, बेसिकली मुझे तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ था काफी कि हम जो है अपनी ऑडियंस जो है उसको हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमको एक्चुअल में किसको क्या बताना है या किसको क्या प्रोडक्ट सेल करना है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है बेसिकली हमारे साथ होती थी। फिर होता है सॉफ्ट कोर सेलिंग। सॉफ्ट कोर सेलिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग एक रिलेशन बिल्डअप बना ले। जैसे अगर पेन को ही सेल करना है, तो अगर एक घोड़े को पेन बेचना है तो हम लोग भी घोड़ा ही बन करके जाएं, या जिस तरीके से वो अच्छा फील करता है उस तरीके से हम लोग जाएं, उस तरीके से हम लोग सेल करने की कोशिश करें। आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग अप्रोच कैसे करें। जैसे कि अगर हम लोग, हमें अपने बिजनेस के बारे में बात बताऊं आप लोगों को कि जब हम हार्डकोर सेलिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं तो हमको क्या है, अप्रोच कैसे करना है, किसी भी बिजनेस को अप्रोच कैसे करना है। तो हमें क्या करना रहता है कि हमें अपने जो बिजनेस के होते हैं कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है कि हमारे बिजनेस के कीवर्ड्स क्या हैं। किसी भी बिजनेस के जो भी कीवर्ड्स होंगे वो कीवर्ड्स के वाइज हम लोग उसका फनल बनाते हैं। तो उस फनल को बनाने के बाद से हम जो है डिसाइड करते हैं कि वेदर ये पर्सन हमारा अप्रोच पर्सन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वेदर हम इस पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम एक फनल बना करके फिर हम जो है बिजनेसेस को अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अननेसेसरी वर्क जा रहा था, अननेसेसरी जो है हम लोग एफर्ट कर रहे थे, तो वो सारे एफर्ट और वर्क हमारा रिड्यूस हो जाएगा और हम लोग टारगेट ऑडियंस को ही कोशिश करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये सोचे कि जैसे हमने फेसबुक पर एड लगाया टारगेट करके, ये भी एक तरीका हो सकता है कि अप्रोच करने के लिए। उसमें भी आप लोग अगर कीवर्ड देखोगे तो आपके बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, तो वो एक अप्रोच करने का तरीका हो सकता है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि आपके पास में जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, इस तरीके से और B2B या B2C जो प्लेटफॉर्म है आप वहां पर भी अप्रोच कर सकते हो। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आप गूगल पर अप्रोच कर सकते हो थ्रू गूगल एडवर्टाइजमेंट, उस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है अगर आपने बिजनेस के प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपका जो फोकस होना चाहिए, आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप जो है सामने वाले को कोई फीचर ना सेल करें। आपको सेल करना है तो आपको प्रोडक्ट सेल करना है। यहां तक बात क्लियर हो रही है किसी को? फीचर एंड प्रोडक्ट। आवाज आ रही है आप लोगों को?
Yes. Yes, sir. Yes. फीचर और प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हैं? Integral part of the product. जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, एप्पल का मोबाइल आप लोगों ने देखा होगा, है ना? तो एप्पल का जो मोबाइल होता है उसमें ये बताया जाता है कि इसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है, इस तरीके का कैमरा हुआ, तो ये सब क्या हुआ? ये सब उसके फीचर हो गए। लेकिन एक्चुअल में जब इंसान डिसीजन लेता है या उसको परचेज करने की कोशिश करता है तो वो क्या सोच करके लेता है? वो ये सोच करके लेता है क्या कि उसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं, उसमें 4 कैमरे लगे हुए हैं, उसका प्रोसेसर ये लगा हुआ है, या फिर उसको हैंग नहीं करता, ये सब सोच करके लेता है क्या? बिल्कुल, दैट्स करेक्ट। वो जो लेता है वो उसका जो है मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगा, एक परसेप्शन लोगों का बन जाएगा कि ये एप्पल का मोबाइल लेते हैं तो या एक अच्छे फैमिली से होंगे, या तो फिर ऐसा होगा कि ये अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, या ये लाइफ में सेटल होंगे। तो हमें क्या करना है? हमको अपने बिजनेस का सबसे पहले हमको अपने बिजनेस का जो बेनिफिट है और वो बेनिफिट सामने वाला फील कर रहा है उसको हमें सेल करना है, हमको फोकस ही उस पर करना है। हमें ये नहीं बताना कि हमारा फीचर क्या है। जैसे मैं अपने अगर बिजनेस के बारे में आपको बताऊं तो मेरे बिजनेस का मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली से हमको बोलेंगे तो मुंबई में हम 8 घंटे 5 घंटे में डिलीवरी कर देते हैं, डोर टू डोर। कोई भी सामान हम दिल्ली से उठाएंगे और मुंबई में 5 घंटे 8 घंटे में डिलीवरी कर देंगे, तो ये हमारा फीचर हो गया। हम जब सामने वाले को बताते हैं कि आप अगर किसी भी कुरियर को लोगे, वो कुरियर वाला आपको हो सकता है पैसे कम ले, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा सर्विस दे दे, लेकिन जब मैं आपको ऐसी जरूरत पड़ जाएगी कि आपको 5 घंटे 10 घंटे के अंदर मान लिया कि कोई भी सामान आपको दिल्ली से चेन्नई पहुंचाना है, सब कोई भी नहीं पहुंचा पाएगा। उस कंडीशन में हम आपको पहुंचाएंगे और हम आपके इमरजेंसी के टाइम पर मदद आएंगे। और हम कभी भी किसी भी जो सिमिलर हमारे कुरियर वाले लोग रहते हैं उनसे मैं कभी कंपटीशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है और ना ही जो उनका सर्विस ले रहे हैं वो मेरे कस्टमर है। तो जब हम लोग पहले अपने बेनिफिट पर फोकस किए कि हमारा बेनिफिट क्या है और वो बेनिफिट को किसको लेना होता है, वो कौन है जो उस बेनिफिट को ले सकता है, या कौन है जो उसकी पेइंग कैपेसिटी है कि जिसकी पेइंग कैपेसिटी है कि वो हमको उतना पैसा दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ही बिजनेस के एक एग्जांपल और आपको दूंगा। अगर हम लोग दिल्ली से मुंबई एक एनवलप ले जाते हैं, उसको 8 घंटे में 5 घंटे में डिलीवरी करते हैं, तो उसका हम लोग 5,000 6,000 रुपये चार्ज करते हैं। वही सेम चीज अगर कोई स्पीड पोस्ट करेगा तो उसको 50 रुपए लगेंगे, कोई नॉर्मल कुरियर से भेजेगा तो उसको 100-200 रुपए लगेंगे, लेकिन उसी का हम लोग 5,000 6,000 रुपया चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे टाइम में दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये जो है हमारा एक तरीके से हमको लोगों से थोड़ा सा अलग होकर के करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी हमारी एक यूनिकनेस हो जाएगी। तो हमको क्या करना रहेगा? अपने को थोड़ा सा अलग बनाना रहेगा, अपने बेनिफिट को समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको समझ में आ जाए कि मेरा बेनिफिट क्या है, मेरा प्रोडक्ट या सर्विस लोग क्यों यूज करते हैं और उनको अप्रोच कैसे किया जाता है। ये 3 चीजें हमको समझ में आ गई। चौथा चीज हो गया कि हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करें। कोई भी चीज अगर हम लोग किताबी बातें करेंगे या कुछ भी चीजें ऐसे बताएंगे तो क्या होगा, लोगों को पर्टिकुलर समझ में नहीं आता है। क्योंकि भले कोई भी पढ़ लेता है, जो हमारा हो सकता है कि मतलब मार्केट ही ऐसा हो, तो वहां पर सारे जो डिसीजन होते हैं, सारी बातें होती है, सारे कन्वर्जन होते हैं, वो सारी चीजें इमोशनली होते हैं। जब तक इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, तब तक वो आपसे सर्विस नहीं लेगा। जब उसको एक ट्रस्ट हो जाएगा, अगर हमको कोई अपना सामान देता है तो वो क्यों देता है? क्योंकि उसको ये मालूम रहता है कि हम 5 घंटे 8 घंटे में उसका सामान भेज देंगे, और वो खुद वो चीज नहीं कर पाएगा, तब वो हमारे ऊपर भरोसा करता है। तो जो हमको कम्युनिकेट करना है, तो ये चीज कम्युनिकेट सोच करके कम्युनिकेट करना रहेगा कि हर इंसान इमोशनल होता है और हर डिसीजन, चाहे उसके जितने भी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन पर आप चले जाओगे तो वो सारे सबसे बड़े डिसीजन, वो सारे डिसीजन इमोशनल बेसिस पर ही उसने लिए होंगे। और जो उसके सबसे अच्छे रिलेशंस होंगे वो सारे रिलेशन इमोशनल ही होंगे। चाहे आप फादर मदर का रिलेशन देख लो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देख लो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन देख लो, वो सारे डिसीजन इमोशनल ही होंगे।
जहां पर इंसान ज्यादा पैसा खर्च करता है। Excuse me, Prashant ji, if you could just wrap it up soon. Yeah. टाइम खत्म होने वाला, ठीक है। तो वो कस्टमर के टाइप को हमको भी समझना पड़ेगा कि कस्टमर किस टाइप का, उसका पेइंग कैपेसिटी क्या है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को समझेंगे। अच्छा, सेल्स करने की जो टेक्निक होती है बेसिकली कोल्ड कॉलिंग टेक्निक होती है। तो कोल्ड कॉलिंग टेक्निक में हमने जो है एक तरीके से अपने पास, आपने बीपीओ का नाम सुना होगा, हमने बीपीओ लगा रखा हुआ है। बीपीओ के लिए जो है लोग बैठे हुए हैं, उनको हम लोग नंबर दे देते हैं और उन लोग कोल्ड कॉलिंग करते हैं। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हो गई, ये कोल्ड कॉलिंग, ईमेल मार्केटिंग, इस तरीके से चीजें हो गई। हम लोग कस्टमर को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। फिर सेल्स की हम लोग स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन आ गया, तो कोई भी को हम लोग अगर बीपीओ में भी बिठा देंगे तो वो क्या है, जवाब प्रॉपर नहीं दे पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके सेल्स को पूरी तरीके से स्क्रिप्ट कर देंगे कि अगर किस तरीके से पूछेगा तो ये जवाब देना है, इस तरीके से पूछेगा तो ये जवाब देना है। और उसी तरीके से जो है, अगर जो ऑब्जेक्शन उसका आएगा, उस ऑब्जेक्शन के लिए किस पर्सन को हैंडल करना है, तो इस तरीके से हम लोग सेल्स को स्क्रिप्टिंग कर देते हैं। फिर हाई प्रेशर प्रैक्टिस, अचानक से जैसे आपके पास रहता है कि अभी 2 घंटे के अंदर ये जो है ऑफर खत्म होने वाला है, तो ये तरीका हो गया हाई प्रेशर टैक्टिक्स का। और अपसेलिंग, जैसे हमारे पास अगर कोई डोमेस्टिक कुरियर सर्विस लेने आया, मैंने उसको क्या किया कि उसको इंटरनेशनल भी सेल कर दिया, तो ये हमारा अपसेलिंग हो गया। और हमसे अगर कोई आ गया कि हमको आप डोमेस्टिक सर्विस दे दो, उसको हमने बोला कि आप एक काम करो, आप हमारा जो है गाड़ी भी हायर कर लो अपने ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए, तो ये हमारा क्रॉस सेलिंग हो गया। रेफरल प्रोग्राम भी करते हैं हम लोग, जैसे कि अगर आप हमारे कस्टमर हैं तो आप किसी और को साथ में लाओगे तो हम आपको 10-5% डिस्काउंट देंगे। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हम लोग कर सकते हैं, अगर सेल्स को हमको बढ़ाना होगा तो हम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी कर सकते हैं। अब अगर जैसे आपने एक बेसिक लेवल अटेन कर लिया है, तो अब इसके बाद आपको अपने स्टार्टअप को स्केल करना है। तो जब आपको स्केल करना है स्टार्टअप को, तब आपको खुद बैठ करके हर काम नहीं करना रहेगा। आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप कुछ टूल्स ऐसे कुछ बनाए ताकि आपके ऑडियंस जो है आइडेंटिफाई हो सके। आप अपने ब्रांड के इमेज को भी, जैसे आप लिंक्डइन पर या फिर अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सारी जगह पर आप अपने जो है ब्रांड के इमेज को बिल्डअप करें। और जितने भी सारे टूल्स होते हैं ऑटोमेशन के, जैसे गूगल के भी बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे जो है कंपनीज सेट बेस्ड टूल प्रोवाइड करती है, तो वो सारे ऑटोमेशन टूल्स आप कंपनी में जरूर लगाएं अगर आप स्केलिंग का सोच रहे हैं तो। और उसके बाद डेटा एनालिटिक्स का यूज करके आप लोग उस डेटा को अच्छे से एनालिटिक्स करें और आप समझ पाएंगे कि आपका कंज्यूमर बिहेवियर किधर किस तरीके से जा रहा है, आपके कस्टमर किधर जा रहे हैं, किस तरीके से लोग आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है परचेज कर रहे हैं। और इसके बाद को आपको क्या करना कि कस्टमर को हमेशा आप अपना मान करके चलो, कि ये मान करके चलो कि जिस तरीके से आपको कोई बेच करके जाता है आप कैसा महसूस करते हो, तो उसी तरीके से आप सामने वाले को बेच कर जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसको क्या अनुभव होगा। तो इम्पैथेटिकली आप जब सोचोगे तब आप एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस आप दे पाओगे। और एक और चीज है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या कंटिन्यूअसली इंप्रूव। अगर आप कंटिन्यूअसली अपने सर्विस को इंप्रूव करते रहते हो तो धीरे धीरे आपका स्टार्टअप स्केल कर जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है हार्डकोर सेलिंग स्ट्रेटेजी पर फोकस करो। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्टार्टअप रेवेन्यू जनरेट करेगा। और उस रेवेन्यू से जब आपका रेवेन्यू आने लगेगा तो आप स्टार्टअप स्केल कर पाओगे। और जब तक आपका रेवेन्यू नहीं आएगा तब तक आपका स्टार्टअप सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में हार्डकोर सेलिंग जो प्रैक्टिकली मैंने फील किया, ये काफी वर्क करता है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप नेटवर्किंग के लिए भी जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो, जैसे कि उसमें BNI है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब्स है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जा करके नेटवर्किंग कर सकते हो। वहां से आपको बहुत सारे रेफरल बिजनेस मिल सकते हैं। बहुत सारे B2B प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप जा करके कर सकते हो। तो इस तरीके से बिजनेस में सेल्स इज एवरीथिंग। और हार्डकोर जो है सेलिंग का एक तरीके से हार्ट है, उसको आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आप बड़े हो जाओ या छोटे स्टार्टअप में आप रहोगे, आपको चाहिए होगा। एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी। अगर आप में किसी का कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।
किसी को कोई क्वेरी है? Anyone would like to ask any questions? Okay. So further moving ahead, we would like to thank Dr. Prashant Singh for his informative speech, and I request him to share his mail in the chat box for any queries that attendees might have. Further, we would like to thank all our guests on the panel for making the first session of Conference 2.0 such a warm event with their views and insights. We would also like to thank all the attendees for patiently hearing us throughout the conference. We would like to request all the attendees to vote for today's best speaker by typing the name of your preferred guest speaker of the day in the chat box. A bit faster, please, participants. If you could just type out the name of your favorite guest speaker for today and one name per person. We're cheating out here. A bit faster. And obviously, the poll will also be held in the WhatsApp conference groups for later on. But still, we just have a live voting too. It would be great. Great. The first vote is in. We have 25 participants in the meet. I guess we can at least expect 22 votes. Minimum of 22. Faster, everyone. Faster, faster, faster. Time slipping as we speak. Great. 5 votes to go. Digvijay, I hope you're keeping out an eye on the votes. That's great. I guess we can continue, Aditya. Okay, the top 3 guests of Conference 2.0 shall be declared at the end of Conference 2.0. So we shall return tomorrow with the second session of Conference 2.0 on impact of hardcore sales and scaling up for startups. Until then, stay tuned and keep dreaming. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Have a nice Good day. night. We'll return tomorrow. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone.